in my lab. So I can see some students are, or some participants are from non-engineering background. So they may not be knowing about engine or agricultural machines. So first you must know what is an engine, what is the function of an engine. Anyone can tell from non-engineering branch? What is an engine? What is the function of engine? What is the use of engine? Where it is used? Have you seen? Where engine is used? In automobiles? Automobiles. Okay. So engine is just a power source. So you need some power to propel vehicles. Like a human being is also a power source. We can do some operations. Similarly, animals is a power source. So same way, this is a mechanical power source. Similarly, motor, that is the source of electric power. So these are the source of the power which we need to propel any machines. Otherwise, machine cannot move its own. It needs some power to, so that we can move. So for that, in automobiles, in tractors, or in any other vehicles, we need a power source for propelling it, for pushing it, for you can say pulling or pushing it. For that we provide engine. So you can say engine is a mechanical device which is used to convert fuel energy into mechanical energy. There are, you have heard about different sources of energy. So energy, you may be knowing, neither it can be created nor destroyed. So only we can change from one form to another form. So similarly, in any device, whether it is engine, whether it is fan, whether it is electric tube, so these are the all of the devices. We convert one energy into another form. So let's say fan is used to convert this electrical energy into the mechanical energy. Mechanical means in terms of rotation, RPM. So that is the mechanical energy. So here, what is our input? Input, we give the fuel. Fuel may be petrol, fuel may be diesel, fuel may be kerosene, fuel may be biogas, whatever fuel we have to give to the engine, and in output we get the mechanical power. Means we need some motion, so that by that motion we can propel our vehicle. So if you talk about the engine, engines are of basically two types. One is internal combustion and second is the external combustion. So you have heard about steam engines. They are the external combustion, means combustion of fuel that is outside the engine. In internal combustion or burning of the fuel is inside the engine itself. So in tractor or in car or in this, nowadays we use internal combustion engine. So external combustion engine were being used in railways, earlier railways, and in steam engines or boiler, etc. That is the external combustion engine. So here again internal combustion engines are of two types based on the fuel. One is petrol engine and second is the diesel engine. So their working is different. So you must know how the petrol engine works and how the diesel engine works. In case of petrol engine, we use because burning of fuel requires oxygen. Without oxygen, no fuel will burn. Whether it is petrol, whether it is wood, whether it is diesel. So every fuel needs some oxygen or air for burning. Okay. So engine is similar to our body, human being. We are also an engine. Whatever is the system in human beings, we are provided in the engines. Like we eat food for energy. Similarly, we provide the fuel. We supply the fuel to the engine so that we get energy. So like we need air for respiration. So similarly, air is needed or oxygen is needed for burning of fuel.
like we expel our waste. Similarly, engine, there are some waste after burning of fuel that we have to expel outside. So it is similar to our body, you can see. Whatever is the system in our body, all the systems are provided here in the engines. So in engine, because we have to generate energy and we have to burn the fuel. So in this system, engine, we have provided a system where fuel burnt. So that system is cylinder. We have provided a cylinder and piston. You can see here, this is the cylinder. It is a cylindrical chamber. Just like you can say room, it is a cylinder. In this, because it is cylindrical in shape, so we have given the name cylinder. Inside cylinder there is a piston, which moves up and down. And on the top of the, this is piston. On this top, we inject the fuel. And what happens when fuel will burn on the top? So because it is a closed chamber. So in closed chamber, when fuel will burn, pressure will rise. So it will push the piston down because it is on the top. When fuel is burnt, piston is at the top. So there is a cylindrical space in which piston moves up and down. So means this motion we have to obtain at our outlet, because this is a mechanical power. Because, by rotation of these pistons, that is the reciprocating motions up and down, and we get the powers on the flywheel. This is our flywheel, where we get powers in terms of the rotation or rotary motions. So for converting this motion, because here we get the reciprocating motions up and down, and we have to convert these reciprocating motions into rotary motion. This is rotary motion and this is the reciprocating motions. So between that we have one connecting rod which connects this piston with the crankshaft. There is another shaft like this. This is a shaft. Here it is given a shaft, that is called crankshaft. So that converts this is crankshaft. So it rotates like this, means we get the rotary motions. And at the end of this shaft, at the end of this one end of this shaft, we connected a flywheel. Because this weight of the flywheel is very high, because we need continuous motions to utilize it for further purposes. So for that you have a certain moment of inertia. So that depends on the mass of the body. So that's why we need continuous motion. So we have provided a very high, you can say weight flywheel. So this is our flywheel, where we get continuous rotations. And this power then you can use for any purpose. You can whether use in a bus, you can use in tractors, cars, or any stationary work you can do, because we got the rotary motions. So between this, we need oxygen. Already I have told you, for burning of this fuel. So for that we have provided a system where air will goes with this fuel. So in petrol engine and diesel engine, one difference is that in case of petrol engines, we mix air and petrol. Both we mix first, then we supply to the cylinder. First we mix that air and fuel in a ratio. We mix in 1:15 ratio. 1 ratio of the petrol, 15 ratio of the air. That we mix and then we supply to the cylinder. But in case of diesel engine or the vehicle which are based on the diesel, in that case, because those engines they are known as compressed ignition engines, CI, compressed ignition. Means ignition in case of petrol engine and the diesel engine is different. In case of petrol engine, ignition or burning of fuel, that is by the spark. We have to provide the spark. स्पार्क प्लग सुना होगा, स्कूटी वगैरह में भी, बाइक्स वगैरह में भी यूज होता है. जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ आती हैं
in that we provide a spark for burning of the fuel. But in case of diesel engine or those vehicles, whether it is bus, truck, railways, whatever, there is no spark plug. So burning of fuel is by the heat of the compression. Means when this piston reciprocates inside a closed chamber or between inside the cylinder, because that is closed, from everywhere it is closed. So what will happen when we reciprocate it? Inside it, pressure will build up, and definitely with the pressures, heat will generate. So when the temperature of that air reaches to a certain level, at that time we inject the fuel. And because inside already heat is there, temperature is there, so when we inject the fuel, then fuel will start burning. So in this way, burning of fuels takes place in diesel engine. But in case of petrol engine, we inject fuel and air both. So and then after injecting, we just produce the spark by the spark plug. And by the spark of the spark plug, petrol catches the fire, because petrol is very, you can say, highly volatile, highly combustible, so it catches fire even at some distance also. But diesel is not so much volatile. So for diesel, we need certain temperature and pressures for burning. So you can say in case of diesel engine, we supply the air first. We supply the air inside the cylinder. That air is compressed, and then we inject the fuel. And then burning takes place. So after burning, that will force the pistons downward. And that motion is transmitted to the flywheel through crankshaft and connecting rod. So between that one is connecting rod, which connects this piston with the crankshaft. And at the end of the crankshaft we have a flywheel. So this is the flywheel where we got the rotary powers. So now there are 4 strokes. All these events, what I have told you, they are completed in 4 strokes. First, suction stroke means we inhale the air, or we inhale the oxygen inside us. Similarly here, oxygen or air is supplied to the engine. So during that stroke is known as suction stroke. Suction means something is inhaled. So that is suction strokes. In case of this diesel engine, we supply the air during suction stroke. Then after suction, we compress that, because we have to increase the temperature and pressure of that air to a certain level, so that fuel starts burning easily. So to increase the temperature and pressure, there is a stroke, that is compression stroke. So means first piston moves downward, so that will suck the air inside the chamber. So chamber will fill with the air. Then piston again will move upward, from downward to upward. So whatever air inside, that is compressed, and due to compression the temperature will rise. And then third stroke comes, that is the power stroke. Or in that stroke we get the power. So our burning of fuel takes place during power strokes, when we inject the fuel inside the cylinder. So in that strokes we get the actual power. After power strokes, because there are burnt gases, definitely whatever is the residue left inside the cylinder in terms of burnt gases, that we have to expel out before taking the first strokes again, means suction strokes. Before the suction strokes comes, we have to expel all the burnt gases outside. So that is our exhaust stroke. So these are the 4 strokes in which all the events of the engines that are completed. First is the suction, then compression, then power, and then exhaust strokes. And how these, you can say, air enters inside the cylinders, uske liye there are valves. Like in our body, we have nostrils. जहाँ से हमारी ऑक्सीजन एंटर करती है, वहीं से हमारी बाहर एक्सपेल भी होती है. So
So engine में we have provided valves. So is there any valve here? No. So then I will show. इसमें दिखाऊंगा इसके बाद. So that valves regulates the opening and closing, so that when air enters, because at a time only one valve remains open. Either we have two valves. One is suction valves, one is exhaust valve. Suction valves opens when air enters inside the engine or chamber. So during that only suction valves remains open, or inlet valve भी होते हैं उसको. During exhaust strokes, inlet valves remains closed, exhaust valves opens. So all the burnt gases, whatever is inside the chamber, they are expelled outside. And during compression and power strokes, both are closed. Because during अगर कोई open है आपका तो compression नहीं होगा. तो compression के लिए आपको everything it should be closed chamber. And similarly during power strokes means we get powers, there should not be any leakage. So during these two strokes, both the valves are closed. And these valves are regulated by this mechanism. This is our, you can say, controlling the opening and closing of the valves. And this, you can say, tappet rods, you can say push rods, rocker arm assembly, you can say. So this is the rocker arm assembly. यहाँ आपकी ये valves हैं. ये जो push rod है, ये इतनी इसमें valves हैं. Because and then आपको different powers चाहिए. आपको सुना होगा कोई गाड़ी 800 सीसी की है, मारुति 800 सीसी है. कोई गाड़ी है 1000 सीसी, कोई है 2000 सीसी. So what is that? CC means how much volume of air is displaced by the cylinders. So cylinder के अंदर जितना भी volume होता है, that reflect the CC, cubic centimeter. That is the displacement volume inside the cylinders. So जो गाड़ी की capacity है, that is represented by the CC. तो उसके बेस पे हम नंबर ऑफ सिलेंडर डिसाइड करते हैं कि हमारी 2 सिलेंडर की जरूरत है, 3 सिलेंडर की जरूरत है, या सिंगल सिलेंडर की जरूरत है, या 5 सिलेंडर या 6 सिलेंडर्स. So like here you can see here 8 valves are there. It means 4 cylinders is there. Because each cylinder requires 2 valves, one for opening, one for inlet valve, one for exhaust valves. And the piston and cylinders, from the top they are covered. That is the cylinder head. Because it is a cylindrical chamber, so from the top it is covered by the cylinder head. So this is our cylinder head. Okay, and this cylinder head, it consists of all the valves, spark plug. In case of petrol engine, we use the spark plug. Here spark plugs are given. Okay, in case of diesel engine, because no spark plug is used, but we use fuel injection pump. In case of diesel engine, we have to inject fuel at very high pressure. Pressure should be very high. Only then fuel will burn. Otherwise, diesel fuel will not burn easily. It has very, you can say, low volatility. So for burning of diesel fuel, we have to inject fuel at very high pressure. In case of petrol engine, very less pressure is required because petrol is very combustible, very low, you can say, volatile. So then we have cylinder head that consists of all the valves assembly. We have this you can say spark plug. In case of diesel engine, there is a fuel injection pump, and then we have housing consists of the cylinders, and inside this we have pistons. And before that, pistons power is transferred to the where we provide some cooling system, so that because all these parts they are made of metal. So metallic में कुछ parts है cast iron के, कुछ aluminium के, कुछ जिसका maximum जो boiling temperature होता है that is cast iron. बाकी का सबका कम होता है, aluminium वगैरह तो बहुत कम होता है.
और जो इसके अंदर टेम्परेचर होता है दैट रीचेज अप टू 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ इवन कास्ट आयरन दैट इज अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. So we have to provide the cooling system. So for that cooling mechanism is there which takes the extra heat and cools the lower down the temperature. So for that we have cooling system. Similarly we have air supply के लिए अलग system है, ignition के लिए अलग system है. So different systems are there. So इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा वो लगेगा. Now we have generated this power. This power is known as, आपने सुना होगा गाड़ी कितने हॉर्स पावर की, हॉर्स पावर तो सुना होगा सबने. हॉर्स पावर का मतलब है ब्रेक हॉर्स पावर. डिफरेंट हॉर्स पावर होती है हमारी. जो एक होती है हमारी फ्यूल पावर, जो फ्यूल पे बर्न करने से जितनी भी पावर जनरेट होती है दैट इज द फ्यूल पावर. और इसमें इंजन की टर्म में उसको बोलते हैं IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर. जो पावर आपके सिलेंडर के अंदर जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, मींस 1 kg फ्यूल आप अगर बर्न कर रहे हैं या 1 लीटर फ्यूल बर्न कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मच हीट विल बी जनरेटेड. ठीक है, किसी भी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूल कंजम्पशन को, वी विल गेट द हीट वैल्यू, टोटल हीट कितनी जनरेट होगी. सो जैसे हमारी डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 10,500 किलो कैलोरी पर केजी. 1 kg डीजल आप बर्न करेंगे तो 10,500 किलो कैलोरी जनरेट होगी. सो जितना भी फ्यूल आपके इसके अंदर इसमें वो हुआ, कंज्यूम हुआ, उसको कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द फ्यूल पावर. सो दैट इज IHP. नाउ दैट IHP यहाँ तक आते आते उसमें देयर आर लॉसेस. लॉस होंगे बीच में, फ्रिक्शन लॉसेस आर देयर, पंपिंग लॉसेस आर देयर. जो आपके मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको भी रोटेट करने के लिए वी नीड सम पावर, तो उसमें भी पावर कंज्यूम होगी. तो यहाँ पे जो ये पावर कम होगी, लॉसेस को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द ब्रेक हॉर्स पावर. सो दैट पावर इज नॉर्मली रिटन ऑन द व्हीकल्स. कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है हमारी, 100 हॉर्स पावर की है, 50 हॉर्स पावर का है या 5 HP का है. सो दैट इज द ब्रेक हॉर्स पावर. नाउ दिस ब्रेक हॉर्स पावर इज द यूजफुल पावर विच वी कैन यूज फॉर अदर पर्पसेस. अब जैसे ट्रैक्टर है या गाड़ी है, उसमें यहाँ से पावर ट्रांसफर होगी हमारी यहाँ पे रियर व्हील लगते हैं. अगर आपकी 2 व्हील ड्राइव हो तो कुछ गाड़ी आपकी 4 व्हील ड्राइव. 4 व्हील ड्राइव का मतलब है all the 4 wheels gets this power. We have to transmit this power to all the 4 wheels. In case of 2 wheel drive, we have to transmit this power to the rear wheel. So this is the power transmission system. यहाँ से पावर थ्रू मैकेनिकल लिंकेज. अब इसके बाद क्या होगा, एक क्लच होता है. क्लच का काम क्या होता है, अब क्लच गाड़ी जिसने चलाई होगी तो पता होगा. When this is the clutch plate है ये. So clutch plate का काम क्या है, ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है. जो इंजन की पावर है, जो यहाँ पावर प्रोड्यूस हुई, और ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके बीच में ये कनेक्टर का काम करता है. इस पावर को हम, क्योंकि जब इंजन आपका स्टार्ट है फ्लाईव्हील विल रोटेट कंटिन्यूअसली, बट आप गाड़ी को आपको स्टॉप करना है, लेकिन इंजन तो कभी नहीं आप बंद कर रहे हैं. आप जस्ट यू आर ब्रेक लगा रहे हैं, न्यूट्रल में लगा के इंजन इज रनिंग, सो इट मींस फ्लाईव्हील इज रनिंग, बट दिस पावर इज नॉट ट्रांसमिटिंग टू द रियर. सो इसके बीच में होता है क्लच. सो एक क्लच प्लेट है दैट वर्क्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्लाईव्हील के साथ ये कनेक्ट करेगा तो पावर ट्रांसमिट होगी. जब बीच में गैप आ जाए डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सो ये क्लच प्लेट का कवर है. सो ये पूरी असेंबली है इसमें. सो आफ्टर दिस क्लच वी हैव गियर बॉक्स. अब व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द गियर बॉक्स? Because we have to operate our vehicles at different speeds, at different torques and different speeds. We need. ट्रैक्टर में भी क्या होता है, हमें different torque चाहिए.
कुछ ऑपरेशन के लिए आपको फर्स्ट गियर में काम करना है, किसी ऑपरेशन के लिए आपको टॉप गियर में काम करना है। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं नॉर्मली दे वी यू कैन से उनको हम हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर होता है उसको जनरली लो स्पीड पे, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, तो उसके लिए गियर बॉक्स होता है। दिस इज आवर गियर बॉक्स। सो गियर बॉक्स में क्या होता है, वी हैव सेट ऑफ गियर्स, सो डिफरेंट साइज के गियर्स होते हैं। जो स्पीड और साइज ऑफ द गियर्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको स्पीड एक शाफ्ट से यहाँ से शाफ्ट इंक्रीज करनी है स्पीड, व्हाट विल यू डू? अगर इंक्रीज करनी है तो आपको जो साइज है उसको रिड्यूस कर दो, बिकॉज n1 by n2 is equal to t2 by t1. Speed and the size of the gear or pulley that is inversely proportional. अगर इंक्रीज करनी है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा साइज, अगर डिक्रीज करनी है तो इंक्रीज करना पड़ेगा। Then we have differential. This is differential unit because when tractor or the automobiles or vehicles that moves in straight directions, we provide equal power to both the wheels. So दोनों व्हील्स को इक्वल पावर मिलती है। लेकिन जब आप टर्न लेते हैं तो टर्निंग कैसे होती है गाड़ी की? जो इनर व्हील होता है, स्टीयरिंग से आप टर्न करेंगे तो टेक्निकली कैसे होगी? इनर व्हील को लेस पावर मिलेगी, आउटर व्हील गेट्स मोर पावर, सो ओनली देन टर्न टेक्स प्लेस। अगर दोनों व्हील को इक्वल पावर दोगे इट विल नॉट टर्न। सो उसके लिए होता है डिफरेंशियल, व्हिच डिफरेंशिएट्स द स्पीड्स इन एज पर द रिक्वायरमेंट। जब स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब वी हैव टू टेक टर्न्स वी डिस्ट्रीब्यूट द स्पीड्स इन दैट रेशियो। देन वी हैव फाइनल ड्राइव एंड देन वी हैव रियल ड्राइव। बिकॉज इन ट्रैक्टर वी हैव टू रिड्यूस स्पीड, हियर वी गेट हाई आरपीएम, 3000 rpm we get here, but here we need only 25-30 rpm, 20 revolutions per minute. So much speed we have to reduce. So for that we have gears, we have differentials, we have final drive, and then rear wheels. And in this way we get this power on the rear wheels, and then you can say tractor or the vehicles moves, and we can use this power for other purposes. ट्रैक्टर में जैसे पीटीओ शाफ्ट मिलती है, कोई स्टेशनरी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए पुली भी होती है पीछे, और हाइड्रोलिक सिस्टम भी होते हैं, कुछ लिफ्ट करना है आपको तो, और किसी इंस्ट्रूमेंट्स को पुल करना है उसके लिए भी। So that we have discussed this crankshaft, that is the main shaft where we get the power. Then there are other accessories, जैसे आपकी वाल्व्स है, आपका कूलिंग सिस्टम है, उसके लिए पंप चाहिए आपको लुब्रिकेशन भी करना है इसमें, क्योंकि इन ऑल द पार्ट्स वी कैन नॉट कूल इट बाय वाटर एक्सटर्नल पार्ट्स को आप कूलिंग करते हैं वाटर से। जो इनर पार्ट है जैसे पिस्टन और सिलेंडर है, उसके अंदर हम कूलिंग करते हैं लुब्रिकेशन से, उसमें एम ऑयल यूज करते हैं ताकि जो एक्सेस हीट है दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर। तो ऑल दीज एक्सेसरीज, डिफरेंट पंप्स हैं आपके, डिफरेंट वाल्व्स हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर चाहिए। वो कहाँ से मिलती है? दैट वी गॉट फ्रॉम द कैम शाफ्ट। एक और शाफ्ट है इसके साथ, दिस इज द कैम शाफ्ट। तो ये यहाँ से कनेक्ट रहती है, यहाँ से इसका ये गियर, इसको गियर बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। ये जो पिट है दे विल मैच विद ईच अदर एंड वी ट्रांसफर पावर फ्रॉम ड्राइविंग मेंबर टू द ड्रिवन मेंबर। Okay, so like this, one gear is this, one is this one, so they will match with each other and power is transferred from one shaft to another shaft. So crankshaft is getting powers from crankshaft, we transfer power to this camshaft. Okay, so here these are the cams which operates these valves. जब ये extruded portion है, like our knuckles, बीच में हमारा डिप्रेशन है, इसमें भी ऐसे ही है। यहाँ देखो, यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ ये रेज्ड पोर्शन है। When this portion comes in contact with the push rod, it lifts the valve, इस valve ओपन हो जाती है।
Again, by its rotations, valves will close down. Again, when this raised portions which comes in contact with the valves, this push rod, valves will open. और दूसरे जो पंप है उसको भी पावर ट्रांसफर करते हैं कैम शाफ्ट से. So इसको थोड़ा चलाओ. Now you can see the light how it works. So here you can see these are operating simultaneously. Yeah. Go forward. These are pistons. You can see here 4 pistons. These are reciprocating carbon wire. That is our cylindrical space of chamber. Moving up and down. Okay. These are the spark plugs by which we start light the fuel. These are the valves. एक टाइम में ये valve open हुई, एक टाइम में ये valve open हुई. और जो हमारा दो स्ट्रोक है, इस बाकी दो स्ट्रोक में दोनों क्लोज हो गए. Power remains inside the cylinder. And then this is the crankshaft. This is camshaft. This one camshaft. ये panel के हिसाब से. So this camshaft operates these valves और जो आपके बाकी सिस्टम कूलिंग सिस्टम है या फैब्रिकेशन सिस्टम है और दिया कंट्रोल बाय दिस camshaft. ये सिस्टम का कंपोनेंट है. ये और इसके नीचे होता है क्रैंक केस. And below this we have a crank case in which ammo oil is kept. It is a reservoir for keeping the ammo oil. So ammo oil वहाँ से ट्रांसफर होता है different components. This needs lubrication. जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं विच इसमें नहीं है, कट आउट मॉडल है क्योंकि इसके अंदर नीचे एक रिजर्वायर है. इसके अंदर हम जैसे ये है इसमें अंदर ये इसको खोल के दिखाएंगे हम डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग करवाएंगे इसकी. तो उसके अंदर हमारा रिजर्वायर है जिसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करते हैं. एंड दैट ऑयल इज ट्रांसफर्ड टू विद द हेल्प ऑफ पंप. ये पंप है इसका. पंप की हेल्प से डिफरेंट गैलरी बनेगी डिफरेंट कंपोनेंट्स को जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन की जरूरत है तो वहाँ पर इसको कूलिंग पर्पज के लिए सप्लाई करते हैं. अब इसमें आता है हमारा मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग. एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है ओवरहॉलिंग. मेंटेनेंस इज द रेगुलर periodical you can say operations which are needed for smooth working of the engine. जैसे आपको वाटर चेंज करना है, आपको एमो ऑयल चेंज करना है, आपको फिल्टर चेंज करनी है. दिस कम्स अंडर जो रेगुलर मेंटेनेंस है हमारी मेंटेनेंस के. These are the regular procedures which are required for smooth working of the engines. That is maintenance. तो इसको हम पीरियडिकल मेंटेनेंस करते हैं. कुछ होते हैं डेली बेसिस पे भी करते हैं, कुछ हम वीकली बेसिस करते हैं, कुछ फोर्टनाइटली, मंथली, इसी तरह से 6 मंथ पे, 1 ईयर पे बेसिस पे. एक होता है ओवरहॉलिंग. ओवरहॉलिंग मींस डिसमेंटलिंग द इंजन, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स, what is the defects inside the engines, rectify that defects and then again rebuild the engines, cleaning वगैरह करके उसको again rebuild. That is overhauling. Means complete dismantle the engine, identify the defect. What is the defect? आप मैकेनिक के पास जाएंगे कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी धुआं दे रही, तो मैकेनिक क्या करता है? तो आइडेंटिफाई करता है जिस पार्ट्स में प्रॉब्लम है उसको फिर वो रेक्टिफाई करते हैं. So that is our overhauling. Sometimes you have seen this black smoke is coming. What may be the reason of the black smoke? Silencer से आपने देखा होगा कि black smoke आता है. Black smoke कब आता है? जब incomplete combustion. और एक होता है blue smoke. Blue smoke कब आएगा? अभी आपने देखा है ये बनाते हो कोयला बनाते हो यहाँ पे, उसमें पानी डालते हैं. क्यों डालते हैं पानी?
आग लगा के लीव्स वगैरह में, लकड़ी में, उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं इनकम्प्लीट कंबशन के लिए, ताकि चारकोल रेडी हो। तो जब जब उसमें से आग निकलती है उस टाइम स्मोक का कलर क्या होता है, और जब पानी डालते हैं उसके बाद स्मोक का कलर क्या होता है, bluish color होता है, white bluish. So bluish color is when incomplete combustion takes place. Incomplete combustion कब होगा? What may be the reasons of incomplete combustion? Means less air is supplied. It means there is a defect in the air supply system. So air supply system में क्या होता है? Air supply में क्या होता है कि we have to supply the clean air to the user because there are a lot of impurities in the air, dust particles etc. So after cleaning we supply the air and the ratio should be proper. जैसे कि बताया मैंने पेट्रोल इंजन के लिए रेशियो होता है 1:50, इस तरह से डीजल के लिए भी रेशियो होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, डीजल में थोड़ी ज़्यादा चाहिए, हर फ्यूल के लिए अलग चाहिए, वुड के लिए अलग चाहिए, चारकोल के लिए अलग चाहिए। सो एज पर देयर केमिकल जो उसका फॉर्मूला होता है उसके बेस पे ही उसका रेशियो निकलता है। तो हमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमारा दो टाइप का होता है, ड्राई टाइप एक होता है वेट टाइप। सो ड्राई टाइप में जस्ट फिल्टर करते हैं एयर को, या तो उसमें क्लोरीन हो सकती है तो उसको क्लीन करके या उसको हमें रिप्लेस करना होता है। ड्राई टाइप में होता है ऑयल बाथ टाइप, उसमें सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल अप्लाई करके ऑयल बाथ के थ्रू एयर क्लियर होके इंजन हो जाती है। तो उसमें भी अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम जैसे आपका ब्लैक स्मोक का क्या रीजन हो सकता है? ब्लैक स्मोक का रीजन होता है व्हेन ब्लैक स्मोक एक मेन रीजन होता है जब आपका जो फ्यूल है डीजल या पेट्रोल उसके अंदर एम ऑयल मिक्स होता है, जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है। दो चीजें, एक होता है हमारा फ्यूल, एक होता है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। So when lubricating oil get mixed with fuel, so it will give black smoke. So वो mix कब होगा? उसमें क्या होता है, जैसे ये पिस्टन था, पिस्टन के अंदर हमारे रिंग्स होते हैं, क्लोज एयर कंटैक्ट बनाने के लिए ये these are the grooves in which rings are provided. ये 3 grooves हैं इसमें। दो टाइप के रिंग होते हैं, एक one is compression ring, second is the oil ring. नीचे वाला देखोगे this is the slotted ring, this is the oil ring. So for uniform distribution of oil this ring is provided and top grooves में इसमें अभी है नहीं, compression rings are provided. Purpose of compression ring is to provide the closed airtight chamber, कहीं से लीकेज ना हो और टू फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, क्योंकि रिंग जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ओनली रिंग विल कंटैक्ट विद द वॉल ऑफ द सिलेंडर वॉल के साथ, क्योंकि जितना आपका सरफेस कंटैक्ट कम होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। अगर पूरा आप इसके अंदर रोटेट करेंगे तो फ्रिक्शन विल बी वेरी हाई, तो उसमें पावर लॉस होगा। तो उसके लिए हम कंप्रेशन रिंग प्रोवाइड करते हैं। तो लीकेज अगर रिंग्स में डैमेज है तो उसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा तो वो डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑल द ऑयल दैट शुड गो बैक टू द क्रैंककेस, वो वापस जाना चाहिए इसके अंदर। जब आप अपवर्ड जाएंगे तो लुब्रिकेट करेगा, जब डाउनवर्ड जाएंगे तो ऑल द एक्सेस लुब्रिकेटिंग ऑयल दैट शुड बी यू कैन से स्प्राइड बैक टू द क्रैंककेस। सो अगर रिंग में आपकी प्रॉब्लम है, रिंग में डैमेज है, क्रैक्स है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो आपका डीजल के साथ ही मिक्स होगा, तो इन दैट केस ब्लू स्मोक आएगा। दूसरा है कि सुना होगा आपने रेल के जो ट्रैक होते हैं उसमें बीच में हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। व्हाई दैट स्पेस इज प्रोवाइडेड? 2 mm. So in this way we provide the gap, और उसके लिए this is the filler gauge which we use to check the gap. So because 1 mm को मेजर करना आप स्केल से तो नहीं कर सकते, वर्नियर कैलिपर से नहीं कर सकते और माइक्रोमीटर से नहीं कर सकते।
सो वन है इसमें डिफरेंट लीव्स हैं ऑफ डिफरेंट थिकनेस। सो जितना भी आपको गैप रखना है उस थिकनेस को इसके अंदर इंसर्ट करके you can check and you can adjust the proper screen gauge. Similarly हमारी जो valves हैं उसमें भी गैप प्रोवाइड करना पड़ते हैं क्योंकि वहाँ भी valves they are also these are the valves they are direct contact with the heat, तो वहाँ भी एक्सपेंशन होते हैं। तो उसमें भी जो हमारी स्टेम है और valves की जो रोड है उसके बीच में गैप प्रोवाइड करते हैं, वो इसमें अभी दिखाएंगे खोल के। तो उसमें भी हम ये यूज करते हैं, तो वो गैप भी हमें फिक्स करना पड़ता है। इसी तरह से स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में भी गैप होता है। स्पार्क प्लग में देखा है, स्पार्क प्लग आगे से उसको साफ करते हैं, तो उसमें भी हमें गैप प्रोवाइड करना पड़ता है। ये एक देखो कंडक्टर होता है, इसमें ये हाँ इधर है देखो, ये तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। दिस इज द कंडक्टर, ये हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं। हाउ इट वर्क्स, हाई वोल्टेज है यहाँ जनरेट होगी तो जो ये गैप है दैट विल ब्रिज, वेरी हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिज दिस गैप, वो इसमें सिस्टम होता है। तो अदरवाइज देयर इज अ गैप बिटवीन दैट, क्योंकि करंट आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, आपको इस इलेक्ट्रोड से इस पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि एक स्पार्क देंगे, जस्ट स्पार्क देने के बाद दोबारा से आपको गैप मेंटेन करना है। When high voltage is generated, so this gap is bridged and spark will generate and fuel starts burning. तो इस गैप को भी हम 0.5 से 0.85 mm मेंटेन करना है। तो these comes under servicing, माइनर सी चीजें हैं ये। इसके अलावा गैस्केट होता है सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में, so that there is no leakage, वहाँ से भी गैस्केट एस्बेस्टस शीट का बनाता है, तो यहाँ पड़ा भी होगा कोई गैस्केट, तो उसमें से लीकेज होती है गैस की। तो अगर वहाँ से गैस की लीकेज है तो कई बार आपकी गाड़ी पावर जनरेट नहीं कर पा रही प्रॉपर, तो वहाँ से लीकेज हो सकती है, तो उसको इधर अंदर में रिप्लेस करते हैं। सो दीज आर सम माइनर यू कैन से सर्विसिंग और ओवरऑलिंग दैट वी हैव टू कैरी आउट for smooth working of the engines. So now इसकी इंजन की dismantling, this is a complete engine. How to dismantle, what are the different components, और इसको दोबारा से फिर assemble करना है। So Mr. Mushraf is the mechanic, so he will show you all these how आप इसको खोलिए और इसको दोबारा से असेंबल कीजिए। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें सारा। एक और सुना होगा, एक होता है डायनमो और एक सेल्फ स्टार्टर। तो क्या डिफरेंस होता है डायनमो और सेल्फ स्टार्टर में? डायनमो और सेल्फ स्टार्टर जब आप व्हेन यू स्टार्ट द की, व्हेन यू स्टार्ट द इंजन विद दिस की, तो क्या होता है उस टाइम इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। वी नीड सम इलेक्ट्रिकल पावर। आपका ये इंजन है, इसको आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने का मतलब है इस फ्लाईव्हील को आपको रोटेट करना है। ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर हीट जनरेट होगी, आपका पिस्टन मूव करना चाहिए। बाकी फ्यूल इंजेक्शन है या एयर कंप्रेशन है, दैट रनिंग विद द मूवमेंट ऑफ द फ्लाईव्हील। तो जब आप की स्टार्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, वी आर रोटेटिंग दिस फ्लाईव्हील। सो इसको पावर चाहिए, इसको रोटेट करने के लिए। इसको पावर कहाँ से मिलेगी? बैटरी से। बैटरी से चाहिए आपको पावर ना, और बैटरी और इसके बीच में कनेक्ट होता है हमारा सेल्फ स्टार्टर। सो सेल्फ स्टार्टर विल गेट पावर फ्रॉम बैटरी। बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, or you can say chemical power, chemical energy. In battery, we store energy in the form of chemicals, and self-starter converts chemical energy into mechanical energy. क्योंकि आपको इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, जिससे ये रोटेट हो सके। तो इसके साथ कनेक्ट होता है हमारा सेल्फ स्टार्टर, और सेल्फ स्टार्टर को पावर मिलती है बैटरी से। बैटरी में आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर है,
जैसे इन्वर्टर है आपका, खाली बैटरी से आपको करंट तो नहीं मिलेगा ना, अब खाली बैटरी आपके पास, उससे आपको करंट को ड्राइव करना है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं आप, इन्वर्टर लगाते हैं ना, उसको चार्ज भी करता है और आपको वापस सप्लाई भी देता है। तो इसी तरह से सेल्फ स्टार्टर हमें बैटरी से लेके इसको रोटेट करेगा, मीन्स केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक होता है डायनमो, अब बैटरी आपकी लगी हुई है इसके अंदर, उसको चार्ज भी करना है, तो चार्ज करने के लिए वी यूज डायनमो। डायनमो इसका उल्टा है, तो डायनमो या अल्टरनेटर भी बोलते हैं उसको। Nowadays alternators are used, in earlier we were using dynamo. So dynamo या alternator का फंक्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि बैटरी हमारी चार्ज रहे, अदरवाइज तो बैटरी डेड हो जाएगी कंटिन्यूसली। अगर आप करंट यूज करोगे उसमें से तो बैटरी विल डिस्चार्ज। तो उसको चार्ज करने के लिए इसी एनर्जी को जो इसने प्रोड्यूस की इंजन में, एक बार तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी है, दैट वी सप्लाई एनर्जी थ्रू सेल्फ स्टार्टर। इंजन आपका स्टार्ट हो गया, देन दैट एनर्जी व्हिच वी प्रोड्यूस हियर दैट वी ट्रांसफर टू द बैटरी। सो बैटरी की चार्ज रहेगी आपकी एंड दैट इज कनेक्टेड थ्रू अल्टरनेटर और डायनमो। सो वो भी है ये लगे हुए इसमें, ठीक है। बाकी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू मे आस्क। If you want to ask any query, please.